नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेयांस रावल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसका आपके जीवन पर गहरा असर हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस समस्या के सामान्य लक्षणों से लेकर उसके समाधान तक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ हम न केवल समस्या की जानकारी देंगे बल्कि उसके सही इलाज और बचाव के उपायों के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही यदि आपके पास इस विषय से जुड़े कोई भी प्रश्न हैं या अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमसे नीचे टिप्पणी बॉक्स में सहयोगी जानकारी साझा करें। और ऐसे ही मेडिकल हेल्थ से जुड़े नए जानकारी पाने के लिए कृपया आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वास्थ्य से जुड़े एक और नए टॉपिक की ओर। धन्यवाद। बैलेंस प्रॉब्लम्स दैट मीन्स संतुलन की समस्या। संतुलन की समस्या आपको चक्कर आना, ऐसा महसूस होना जैसे कमरा घूम रहा हो, अस्थिरता या हल्कापन महसूस करा सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कमरा घूम रहा है या आप गिरने वाले हैं। ये भावनाएं तब भी हो सकती हैं जब आप लेटे हुए हों, बैठे हों या खड़े हों। सामान्य रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए आपके शरीर के कई अंगों, जिनमें आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़, आंखें, आंतरिक कान में संतुलन अंग, तंत्रिकाएं, हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं, को सामान्य रूप से काम करना चाहिए। जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो आपको संतुलन की समस्या का अनुभव हो सकता है। कई चिकित्सीय स्थितियां संतुलन की समस्या पैदा कर सकती हैं। हालांकि ज्यादातर संतुलन समस्याएं आपके आंतरिक कान, वेस्टिबुलर सिस्टम में संतुलन अंग में समस्याओं के परिणामस्वरूप होती हैं। लक्षण संतुलन की समस्याओं के संकेतों और लक्षणों में शामिल हैं: गति या घूमने की भावना, सिर का चक्कर, बेहोशी या हल्कापन महसूस होना, प्रीसिंकोप, संतुलन का नुकसान या अस्थिरता, गिरना या ऐसा महसूस होना जैसे आप गिरने वाले हैं, एक अस्थायी अनुभूति या चक्कर महसूस होना, दृष्टि में परिवर्तन जैसे धुंधलापन, भ्रम। संतुलन की समस्या कई अलग अलग स्थितियों के कारण हो सकती है। संतुलन की समस्याओं का कारण आमतौर पर विशिष्ट संकेत या लक्षण से संबंधित होता है। गति या घूमने की भावना, सिर का चक्कर। सिर का चक्कर कई स्थितियों से जुड़ा हो सकता है जिनमें शामिल हैं सौम्य पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो (बीपीपीवी). बीपीपीवी तब होता है जब आपके आंतरिक कान में कैल्शियम क्रिस्टल, जो आपके संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, अपनी सामान्य स्थिति से हट जाते हैं और आंतरिक कान में कहीं और चले जाते हैं। बीपीपीवी वयस्कों में सिर का चक्कर का सबसे आम कारण है। बिस्तर में मुड़ने या ऊपर देखने के लिए अपना सिर वापस झुकाने पर आपको चक्कर आने का अनुभव हो सकता है। वेस्टिबुलर न्यूरिटिस, यह भड़काऊ विकार जो संभवतः एक वायरस के कारण होता है, आपके आंतरिक कान के संतुलन वाले हिस्से में नसों को प्रभावित कर सकता है। लक्षण अक्सर गंभीर और लगातार होते हैं और इसमें मतली और चलने में कठिनाई शामिल होती है। लक्षण कई दिनों तक रह सकते हैं और बिना इलाज के धीरे धीरे सुधार हो सकता है। यह बीपीपीवी के बाद वयस्कों में दूसरा सबसे आम विकार है। लगातार पोस्टुरल पेरसेप्चुअल चक्कर, यह विकार अक्सर अन्य प्रकार के चक्कर के साथ होता है। लक्षणों में आपके सिर में अस्थिरता या गति की अनुभूति शामिल है। लक्षण अक्सर बिगड़ जाते हैं जब आप चलती हुई वस्तुओं को देखते हैं, जब आप पढ़ते हैं या जब आप किसी नेत्रहीन जटिल वातावरण जैसे शॉपिंग मॉल में होते हैं। यह वयस्कों में तीसरा सबसे आम विकार है। मेनियर रोग, अचानक और गंभीर चक्कर के अलावा मेनियर रोग में सुनवाई हानि में उतार चढ़ाव और आपके कान में भनभनाहट, बजना या भरा हुआ महसूस होना हो सकता है। मेनियर रोग का कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। मेनियर रोग दुर्लभ है और आमतौर पर 20 से 40 वर्ष की आयु के लोगों में विकसित होता है। माइग्रेन के कारण चक्कर आना और गति के प्रति संवेदनशीलता, वेस्टिबुलर माइग्रेन हो सकती है। माइग्रेन चक्कर आने का एक सामान्य कारण है। ध्वनिक न्यूरोमा, यह गैर कैंसर युक्त, सौम्य, धीमी गति से बढ़ने वाला ट्यूमर एक तंत्रिका पर विकसित होता है जो आपकी सुनवाई और संतुलन को प्रभावित करता है। आपको चक्कर आना या संतुलन खोने का अनुभव हो सकता है। Welcome back to our channel. Have you ever wondered what healthy habits you should add to your list of to-dos? We all should give enough time and attention to our mental health, and what better way than to adopt some new healthy habits along the way? If you keep it a habit, sooner or later, it can feel like a part of you. So, the healthier the better. Here are 8 healthy habits to improve your mental well-being. Number 1, adopting an upright posture. Attention! It's time to stretch out those muscles and stand like you mean it. According to a study in the Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, upright posture can have a positive effect and reduce fatigue. The preliminary study's conclusions suggested that adopting an upright posture may increase positive effect.
reduce fatigue, and decrease self-focus in people with mild to moderate depression. Are you hunched over your phone right now, computer? How's that posture looking? Number 2, practice positive thinking. Research continues to show that your thoughts about yourself strongly affect how you feel. The best way to change any negative feelings you may have is to counteract them with a positive one. According to psychologist Patricia Hartnett, when we perceive ourselves and our life negatively, we can end up viewing experiences in a way that confirms that notion. Instead, practice using words that promote feelings of self-worth and personal power. So instead of saying, "I was horrible at my math test," use positive words and self-compassion, like, "I'll study harder next time, and then I'll do better on the next test." Number 3, take a walk in nature. My favorite. Nature. Is there anything quite like the green grass between your toes? The blue skies above your head, the warm sun burning your nose. Forgot the sunscreen. A simple walk in nature can have the ability to boost your mental well-being, according to research published in the Journal of Positive Psychology. A 2019 study from Canadian researchers found that merely 5 minutes of contact with the natural world improves mood, human health, self-esteem, and general emotional well-being. According to the research study, results indicated that brief nature contact reliably improves both hedonic and self-transcendent emotions. Time for a nice walk in the park with your dog. Of course, don't forget to bring the sunscreen this time. Number 4, hug someone. Sometimes we just need a hug. Maybe that's what your parents once told you. And sometimes they're right. According to findings from a 2011 study conducted by UCLA, oxytocin's receptor gene is linked to self-esteem and optimism. Oxytocin is often known as a cuddle hormone. So I'm sure you can guess what releases oxytocin: hugging, along with kissing, snuggling, and physical touches. Hugging is a great way to release that hormone and perhaps increase your self-esteem and optimism in the process. According to the study, life scientists identified for the first time a particular genes linked to optimism, self-esteem, and mastery, the belief that one has control over one's own life. 3 critical psychological resources for coping well with stress and depression. Sounds like a good hug is sure to give a boost to your mental well-being. Number 5, spend time with your furry friend. Got no one to hug? How about your dog? Don't have a furry friend? Now might be a good time to get one. Need to be convinced? A 2019 research study examined the effects and cortisol levels of college students who spent 10 minutes with animal visitation programs. The student stress hormone cortisol decreased with just 10 minutes of petting cats and dogs. The research article notes, a 10-minute college-based AVP providing hands-on petting of cats and dogs provides momentary stress relief. So when you go on that walk in nature, make sure to bring your furry friend with you. Number 6, exercise. Exercise is not only important for our physical health, but our mental well-being as well. Regular exercise releases endorphins, which make us happy naturally. According to an article from Mayo Clinic, exercise can release feel-good endorphins, natural cannabis-like brain chemicals, endogenous cannabinoids, and other natural brain chemicals that can enhance your sense of well-being. That dog walk in nature really will pay off. Number 7, get enough sleep. You may have heard adults need a good 8 hours of sleep each night. Well, you definitely heard right. We need a good night's rest to recharge with enough energy for the next day. Not getting your 8 hours of sleep every day has been shown to negatively affect your mental health. What makes things worse is 60 to 90% of patients with depression also have insomnia, according to the Sleep Health Foundation. So people whose emotional well-being may already be suffering are possibly causing further health problems by not being able to get their full rest. Not only do you get grumpy and groggy from not getting enough sleep, but it's not the best for your emotional well-being in the long run. And number 8, keep a gratitude journal. Expressing gratitude can work wonders for our mental well-being. Gratitude has been linked to increased happiness, mental health, and improved well-being, according to psychologist Patricia Hartnett. Hartnett notes that the best researched method to increase feelings of gratitude is to keep a gratitude journal or write a daily gratitude list, which means every morning before that walk, write down something you're thankful for, no matter how grand or simple. And at the end of the day, when you go to bed early for those full 8 hours, write down a few more things you appreciate before you hit the sheets, hopefully with your snuggly pet by your side.
So, will you practice some of these habits? Which one will you try out first? Let us know in the comments below. If you enjoyed this video, don't forget to click the like button and share it with a friend. Subscribe to Psych2Go and hit the notification bell icon for more content like this. And as always, thanks for watching. रैमसे हंट सिंड्रोम, इस स्थिति को हर्पस जोस्टर ओटिकस के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब एक दांत जैसा संक्रमण आपके किसी कान के पास चेहरे, श्रवण और वेस्टिबुलर नसों को प्रभावित करता है। आपको चक्कर आना, कान में दर्द, चेहरे की कमजोरी और सुनवाई हानि का अनुभव हो सकता है। सिर में चोट या अन्य सिर की चोट के कारण आपको चक्कर आना का अनुभव हो सकता है। मोशन सिकनेस, आपको नावों, कारों और हवाई जहाजों में या मनोरंजन पार्क की सवारी पर चक्कर आने का अनुभव हो सकता है। माइग्रेन से पीड़ित लोगों में मोशन सिकनेस आम है। बेहोशी या हल्कापन महसूस होना, हल्कापन इसके साथ जुड़ा हो सकता है। हेमोडायनामिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, पोस्टुरल हाइपोटेंशन, बहुत जल्दी खड़े होने या बैठने से कुछ लोगों को अपने रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हल्कापन या बेहोशी महसूस हो सकती है। हृदय रोग, असामान्य हृदय ताल, हृदय अतालता, संकुचित या अवरुद्ध रक्त वाहिकाएं, एक मोटा हुआ हृदय पेशी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या रक्त की मात्रा में कमी से रक्त के प्रवाह को कम किया जा सकता है और हल्कापन या बेहोशी की भावना पैदा हो सकती है। संतुलन का नुकसान या अस्थिरता, चलते समय अपना संतुलन खोना या असंतुलित महसूस होना, इसके परिणामस्वरूप हो सकता है। वेस्टिबुलर समस्याएं, आपके आंतरिक कान में असामान्यताएं एक अस्थायी या भारी सिर और अंधेरे में अस्थिरता की अनुभूति पैदा कर सकती हैं। आपके पैरों को तंत्रिका क्षति, परिधीय न्यूरोपैथी, क्षति से चलने में कठिनाई हो सकती है। जोड़, मांसपेशी या दृष्टि समस्याएं, मांसपेशियों की कमजोरी और अस्थिर जोड़ आपके संतुलन के नुकसान में योगदान कर सकते हैं। दृष्टि के साथ कठिनाइयां भी अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। संतुलन का नुकसान या अस्थिरता दवाओं का एक साइड इफेक्ट हो सकता है।